Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 12th, subject Environment Science, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's topic is soil pollution. What is soil pollution and what are the causes of soil pollution? Let us discuss first what is soil pollution. Soil pollution means any physical or chemical change in soil that adversely affect the growth of plants and other organisms is referred as soil pollution. यानी कि एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, हम अगर इतना ही बोल देंगे कि एनी फिजिकल और केमिकल चेंज in soil is soil pollution? No. Any physical or chemical change in soil that adversely affect the growth of plants and other organisms is referred as soil pollution. The contamination of soil system by considerable amount of chemicals and other substances. The contamination of soil system by considerable amount of chemicals and other substances that causes reduction in its fertility and productivity. That causes reduction in its fertility and productivity, so that its overall crop yield is reduced. So that its overall crop yield is reduced. यानी कि जब हम बोल रहे हैं any physical or chemical change in soil that adversely affected the growth of plants and other organisms, तो इसमें क्या होता है? Cause reduction in its fertility and productivity. तो soil erosion क्या है? The presence of toxic chemicals in soil. The presence of toxic chemicals in soil to pose a risk and threat. To pose a risk or threat to human beings or soil environment is called soil pollution. The presence of toxic chemicals in soil to pose a risk or threat to human beings or soil environment is called soil pollution. Now, what are the causes of soil pollution? What are the causes of soil pollution? Soil pollution can be classified. Soil pollution can be classified. Naturally caused soil pollution. Number first, naturally caused soil pollution, and number second, that is anthropogenic soil pollution. Anthropogenic soil pollution means caused by human activities. Anthropogenic soil pollution means caused by the human activities. We are discussing causes of soil pollution. Soil can be polluted by number of ways. Soil can be polluted by number of ways. The major cause of soil pollution, the major cause of soil pollution are, that is number first, that is erosion. That is soil erosion. हमने लास्ट लेक्चर में सॉइल इरोजन डिस्कस किया है. सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन कैन बी डिफाइंड as the loss of surface and topsoil from one place to another by agents like wind or water is called soil erosion. Soil erosion में क्या है? Soil erosion can be defined as the loss of surface of topsoil from one place to another place by agents like wind or water. तो soil erosion से क्या होता है? It is caused naturally and also by human activity. It is caused by naturally or by human activity, such as farming, mining, construction, overgrazing. Once soil get loose, it is easily transported by wind or water, hence reducing its productivity. यानी कि हम बोल रहे हैं कि due to human activity or by nature, once soil get loose, it is easily transported by wind or water, hence reducing its productivity. यानी कि erosion से क्या होता है? जब erosion से ये जो top soil है, surface of the soil that is transported by wind or water from one place to another place, इससे क्या हो जाता है? It reduces the productivity of the soil. तो इससे क्या होता है? It is the soil erosion is the one cause of the soil pollution. Now the next second one, that is excessive use of agrochemicals. That is excessive use of agrochemicals. हर रोज डिमांड बढ़ जाती है फॉर फूड ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड्स फॉर फूड,
एंड रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। हर रोज़ डिमांड बढ़ जाती है, गुज़ा की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड की कमी है ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ फूड एंड रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। द सॉइल्स आर सप्लाइड विथ केमिकल्स। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास डिमांड बढ़ जाती है लेकिन एग्रीकल्चर लैंड जो है उसकी कमी हमारे पास है। द सॉइल्स आर सप्लाइड, हम सॉइल में सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स किस लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं? टू इंक्रीज इट इज फर्टिलिटी एंड क्वांटिटी, टू इंक्रीज इट इज फर्टिलिटी एंड क्वांटिटी। तो इसमें क्या होता है, सम केमिकल्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। क्या होता है इसमें, जब हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज इट इज़ फर्टिलिटी, टू इंक्रीज इट इज़ क्वांटिटी, सम केमिकल्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड इट कॉजेज रिडक्शन ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो एग्रो केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एग्रो केमिकल्स, इससे भी क्या होता है, सम केमिकल्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड इट कॉज रिडक्शन ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी। नाउ नंबर थर्ड, that is industrial waste. Number third, that is industrial waste. Industrial waste जो हैं, the discharge of industrial waste into soil can result in soil pollution. यानी कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट्स निकलते हैं, the discharge of industrial waste into soil can result in soil pollution. तो वहाँ से क्या निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मिलियंस एंड टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट आर डंप्ड इनटू सॉइल। Millions and tons of solid wastes are dumped into soil. These wastes pose serious threat. These wastes pose serious threat to the structure and fertility of soil and damage its productivity. यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से क्या होता है, when these wastes are dumped, यानी millions and tons of solid waste are dumped into soil, these wastes pose various threats to the structure and fertility of soil and damage its productivity. तो इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डैमेज हो जाती है एंड ऑल्सो डैमेज इट इज प्रोडक्टिविटी। यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन। नाउ देयर इज वन मोर काज, दैट इज एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स। एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। यानी कि कुछ पोल्यूटेंट्स हैं, दे आर रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। कहाँ से वो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं इनटू एटमॉस्फेयर? फ्रॉम फैक्ट्रीज, फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज इन सॉलिड एंड गैसेस फॉर्म्स। यानी कि पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, फ्रॉम फैक्ट्रीज, फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, फ्रॉम फैक्ट्रीज, फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, थर्मल पावर प्लांट्स and residential areas. These pollutants are washed away by precipitation. These pollutants are washed away by precipitation, or their fallout deposits them to the soil, causing toxic effects. यानी कि these are air pollutants which causes soil pollution. Pollutants are released into atmosphere from factories, automobiles, thermal power plants, residential areas. In solid gaseous form, these pollutants are washed away by precipitation and their fallout deposits them into the soil, causing toxic effects. Now, next, that is deforestation. हम बात कर रहे हैं किसकी? Cause of soil pollution की। तो deforestation क्या होता है? Removal of vegetation. Removal of vegetation, of getting food, timber, forest land, mining. These are serious cause of soil pollution. It is serious cause of soil pollution. यानी कि डिफॉरेस्टेशन से भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन में जब रिमूवल ऑफ वेजिटेशन होता है, गेटिंग वुड फॉर गेटिंग टिम्बर, फॉर गेटिंग फॉरेस्ट लैंड, या माइनिंग होती है वहाँ पे, और माइनिंग इज सीरियस कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। यानी कि डिफॉरेस्टेशन से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। नाउ देयर इज फर्टिलाइजर्स यूज। There is use of fertilizers. Fertilizers are used to enrich the soil. हम अपने soil में fertilizers का इस्तेमाल करते हैं to increase its fertility, to increase the its quality, to increase the quantity of crop.
fertilizers are used to enrich the soil, but excessive use cannot support microbial life. यानी कि जब हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक्सेसिव यूज जो इसमें होता है कैनॉट सपोर्ट माइक्रोबियल लाइफ, यानी कि माइक्रोबियल लाइफ जो है सॉइल में excessive use of fertilizers cannot support microbial life, which is so important to enrich the humus. जो microbial life है which is so important to enrich the humus, essential for soil health and plant growth. यानी कि excessive use of fertilizers are used to enrich the soil, but excessive use cannot support the microbial life, which is so important to enrich the humus, essential for soil health और plant growth. तो हम बात कर रहे थे what is soil pollution, any physical or chemical change in soil that adversely affect the growth of plants and other organisms is referred as soil pollution. So cause of soil pollution: erosion is the cause of soil pollution, excessive use of agriculture is the cause of soil pollution. Now there is industrial wastes, tons, millions and tons of solid wastes are dumped into the soil. These wastes pose various threats to the structure and fertility of soil and damage its productivity. यानी कि हम airborne pollutants की बात करते हैं. Pollutants are released to the atmosphere from factories, automobiles, residential areas, thermal power plants. So due to precipitation इनका fallout क्या होता है? Deposit them into the soil, causing toxic effects. Deforestation है removal of vegetation, of getting wood, timber, forest land, or mining is serious cause of soil pollution. And use of fertilizers are used to enrich the soil, but excessive use से क्या होता है? Excessive use cannot support the microbial life, यानी कि excessive use जो होता है cannot support the microbial life, which is so important to enrich the humus, essential for soil health और plant growth. तो इंशाल्लाह रहमान बाकी कल. अल्लाह हाफिज़.